सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और इस वीडियो में हम बात करेंगे मेरे एक्सपीरियंस के बारे में, जो मैंने PwC SDC का इंटरव्यू दिया था लास्ट अटेम्प्ट में, लास्ट जो कैंपस प्लेसमेंट हुए थे, ताकि आप लोगों को हेल्प हो सके जो इस बार उस इंटरव्यू में अपीयर होने वाले हो या उनकी प्रिपरेशन कर रहे हो। तो यू कैन गेट एन आइडिया व्हाट यू हैव टू प्रिपेयर, हाउ इट विल गो। So let's start with that thing. So if I talk about interview, then there was only one interviewer only, and interview has been divided in three parts overall. So it was started, that was on somewhere 27th, and that started in morning 12:30, right, 12:30 p.m. Okay. And if I talk about interview process, then it was divided in three stages. Like, first stage was introduction, that involves tell me about yourself. Then it was technical round, and then after that open forum. So अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो फर्स्टली इंटरव्यूअर जो थे, दे इंट्रोड्यूस देयर सेल्फ एंड आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। तो जो भी आपका रहेगा टेल मी अबाउट योर सेल्फ वुड बी द फर्स्ट क्वेश्चन, जो इंट्रोडक्शन पार्ट में पूछ लिया जाता है, और उसमें आपको वो सबसे अच्छा बेस्ट आंसर देना होता है। वहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस, सब चीज़ों का टेस्ट हो जाता है। उसमें उसमें अपना बेस्ट बता दो, जो भी आपके पास अवेलेबल है, जो भी आपने करा है अपनी आर्टिकलशिप जर्नी में, और जो एक्सपीरियंस आप होल्ड करते हो। तो इट स्टार्ट लाइक दिस, दैट दिस इज़ लाइक आई एम शानू शर्मा एंड रिसेंटली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। एंड अगर इसके अलावा भी आपके एजुकेशन में कुछ और है, जैसे BCom ऑनर्स वगैरह, वो बता दो। अदरवाइज देन गोज ऑन योर आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस, दैट आई हैव डन आर्टिकलशिप फ्रॉम दिस एंड दिस फॉर्म। एंड इतना आपका जो भी था एक्सपीरियंस था, और ऑडिट का इंटरव्यू है तो ऑडिट से रिलेटेड जो भी एक्सपीरियंस है, जो सबसे बेस्ट पार्ट किया है, उसको जरूर हाईलाइट करो। इंडस्ट्रीज हाईलाइट कर सकते हो अपनी, ये सब हाईलाइट करके अपना टेल मी अबाउट योरसेल्फ खत्म करो, ठीक है। उसके बाद ऐसे खत्म हुआ, पहले उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, देन आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ व्हेन दे आस्क मी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। सो जब टेल मी अबाउट योर सेल्फ क्वेश्चन खत्म हो गया, उसके बाद हम आते हैं सेकेंड राउंड पे। देखो, कोई भी इंटरव्यू होता है ना, ऑलमोस्ट 10 के राउंड क्वेश्चन होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया इंट्रोडक्शन में, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, बाकी के टेक्निकल राउंड के क्वेश्चन होते हैं, और लास्ट में आता है ओपन फोरम। अब टेक्निकल राउंड में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे? टेक्निकल राउंड में सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट काइंड ऑफ ऑडिट आई हैव डन इन माय आर्टिकलशिप। सो आई हैव एक्सप्लेन देम, ठीक है, विच आई ऑलरेडी टोल्ड इन टेल मी अबाउट योरसेल्फ, बट दे अगेन आस्क्ड मी विच ऑडिट आई हैव डन। Then after they asked me what kind of observation I had, and for a specific sector, like they mentioned that you have audited this area, yeah, this industry mostly. So what kind of observation you faced there? So ये था मेरे रिज्यूम से रिलेटेड जो था। उसके बाद टेक्निकल राउंड शुरू होता है, जो मेनली बेसिक्स हमारे ऑडिटिंग स्किल्स पे बेस्ड होता है। तो दे आर स्टार्टेड विद दैट what are the audit assertion for balance sheet. After that they asked me that audit risk, that is also a basic question of auditing. After that they asked me how to audit payroll, and after that they asked me how to audit data. Say, after this they asked me one question, differentiate between two things, like what is differentiate between provisions and reserves. Then after that there was a case study. So after case study ended, one or more technical question around, and after that happened, and that is concluded by technical session. And after technical session there is an open forum. Open forum mein you can ask question from interviewer. That open forum was started, and they asked me if I have any question for themselves. So basically I would like to give you a tip here, ki either you know or you don't know, but you should ask a question there. Because if you don't ask a question and you will say no sir, I don't have any question for you, or ma'am, then it will create a negative impact that you are not disinterested. You are disinterested and not interested for that role. Okay, you just want to end this interview as soon as possible. So more or less, always ask a question what it can be. Okay, so just ask a question. When they ask you, do you have any question for me, ask any question whichever in your mind, but it's sensible, and that's all. Like, you can ask what would be your growth in that organization, or you can ask कि if you want, you can take feedback also. So you can ask them, if you want feedback kind of thing also, then you can ask them like, can you let me know which kind of area I should focus until the time I join this organization, or in my first 1 month of organization, so I prepared those areas. So such kind of question you can ask for in that case, in last one. So this is all open forum, and after that this process ends. So three parts: firstly introduction, they introduce yourself, I introduce myself,
And then technical round mein I told you that something related to your resume, very well prepared, and basic interview questions. Basic, I told you, audit risk, audit assertions, materiality kind of area, then data, payroll testing, these kind of areas, and differentiation question, and case study related. Case study was related to something कि debenture redemption reserve kind of area. So such kind of basic question, accounting and auditing question can be asked. These are technical. On an average, in every interview, there are just around 10 questions. First is tell me about yourself. Last is do you have any question for me. In between, questions will be based on your resume or auditing basics. Okay, so you have to prepare that very well. This is all about my interview experience, and I have answered all the questions. I don't think somewhere I'm stuck or I did not know any answer, and nothing like that happened. Okay, so I have answered all the question and I have got the chance and I got selected. Now I'm working with PwC. So this is all about my PwC SDC interview experience. If you have any query, you can comment down or you can reach out to me any social media platform. Links all are in description, and wish you all the very best for your interview rounds whenever they will gonna schedule, or